Now, so far as this hire purchase chapter is concerned, in the last lecture, we had understanding, or I'll say the better understanding, relating to the accounting treatment that we need to give in the books of hire purchaser and the hire vendor. I'm sorry, today I won't be able to shout a lot. No, I'm having such throat infection. We understood that so far as recording a transaction in the books of purchaser is concerned, the capitalization is to be done on cash price only, not on an higher purchase price. So far as the seller is concerned, we can recognize the revenue at the time of transfer of possession only up to the extent of cash price. Interest we need to record as a revenue over a period of time. We also understood that to solve these questions or to do the proper accounting of a transaction which is taken place under hire purchase arrangement, we need to ensure that for each installment we have both the elements, that is cash price element and interest element. इंस्टॉलमेंट तो रहेगा, तो इतनी डिटेल अगर हमारे पास नहीं होती है तो we will not be able to do the accounting of any transaction which is happening under hire purchase. So based on that, we started solving the questions relating to how to segregate or how to split an installment amount into cash element and interest element. That is what we started with. The first question was easy, where we understood that initially the amount of interest would be on higher side. Why? Because interest is charged on outstanding principal amount. Now in context with that, I'm every day, whatever we understood, those who are attending on Telegram, no, I used to ask the questions. Now that questions, some questions are being made by me, some questions are your past examination questions. So this is what they're asking. So we'll make it as a part of our habit that whenever we are studying MCQs relating to it, we would be having on this channel itself. And gradually those who are a part of our CAP, only those will be allowed in that channel. So only those person will have this advantage. Now further, in the second question, we need to check that the information, if not fully given, that means normally I need what is the cash price, what is the installment amount, and what is the rate of interest. If the full information has been given to us, we would not have faced any difficulty. But when the part information has been given, second question was a situation where the cash price was not given. In fact, that is something that we need to find out. So therefore, in such cases, we thoroughly need to understand how the interest has been calculated or should be calculated. So we cannot start with the first installment, because the first installment will include the interest element, that is a time value of money spread over a number of years for more than one accounting period. Easiest way of entering or easiest way of solving would be
by way of starting with the last installment. So we entered from the last installment. Installment is always inclusive of interest. We assume cash price 100. We added whatever rate of interest, it would be 10, 12. We found out the installment would be at 110 or 112, as the case may be, depending upon the rate of interest. And then we started doing the reverse calculation. For first installment, we splitted what is an interest element. We deducted it. Whatever is left out is a principal for third installment, but inclusive of interest for the second installment. ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट चीज है. आपको मैंने बोला था कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा जो आपने नहीं पूछा. ये यही पॉइंट है. क्या? जो थर्ड इंस्टॉलमेंट, सॉल्यूशन निकालो. चलो कल का, ये तो है ही मेरे सामने, आप भी निकालो. द पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. If you see the last installment, when you see the last installment, which is of 5,000, out of which we splitted an interest element of 536, what is left out? Principal of the last installment, that is 4464. This is a principal for last installment, but that was directly added in the second installment of 3,000, and 4,464 plus 3,000 was taken as a base at 112. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 4460 पे नहीं लगा इंटरेस्ट. 4460 को माना गया इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि उसको 3,000 में ऐड किया गया, फिर रिवर्स कैलकुलेट किया. जबकि थर्ड इंस्टॉलमेंट में इट इज अ प्योर प्रिंसिपल एलिमेंट. हेलो, 4464 पे आप 12% अप्लाई करो, देखो वही इंटरेस्ट आएगा 536. आप समझ रहे हो ना मैं जो बता रहा हूं? जबकि सेकेंड इंस्टॉलमेंट में उसको किस में ऐड किया गया? 3,000 में ऐड किया गया. 3,000 is an installment amount which is inclusive of interest, which is inclusive of, फिर भी उसे ऐड किया गया 4,464. इसका मतलब सीधा ये होता है that this 4,464 is it treated as inclusive of interest for second one. Is it fair or not fair? Tell me. ये सही है या नहीं है? सही है या नहीं है? आपको नहीं लगता है 4,464 is a principle? How can you do the reverse calculation 112? What you should do? देखो, ये कुछ ऐसे चिंतक होंगे जो ये सोचेंगे. मैंने भी ये सोचा था पहली बार, तो इसलिए बता रहा हूँ. There is nothing wrong in thinking other option. मेरे दिमाग में थॉट क्या आया था पहली बार? 3,000 पे रिवर्स कैलकुलेशन होना चाहिए और 4,000 पे सीधा 12% अप्लाई करना चाहिए. क्यों? क्योंकि 4,400 वाला जो अमाउंट है 4,464, that is principal element. 3,000 is a installment element. So far as 3,000 is concerned, you should do what? 12 divided by 112. So far as 4,464 is concerned, you directly multiply with 12%. Do the summation of both of this interest. That is an interest element for the second installment. Isn't it so? ऐसा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों नहीं हुआ? सोच के बताओ. ये थोड़ा वाइडर लेवल ऑफ थिंकिंग है. अगर थोड़ा रिवीजन कल ये क्वेश्चन का घर पे जाके किया होगा ना फेयर नोटबुक में, इसने तो किया ही है, क्योंकि पहले 2 चैप्टर तो नियम है ना, करेंगे ही करेंगे. बाद में देखते हैं, बाद में फ्रेंड ने पूछ लिया, तूने लिखा है ना, ठीक आ गया. यारी दोस्ती है ना यार, एक ही नोटबुक से बनने
प्यार बढ़ता है इससे। तो क्यों ऐसा नहीं किया वो बताओ चलो। ऐसा क्यों नहीं किया? देखो कुछ लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर भी समझ में नहीं आएगा, अगर मैं जो बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से नहीं सुन रहा हूँ। मैं बोल दूंगा फिर भी नहीं समझ में आएगा, और बाद में हफ्ते बाद महीने बाद तो तुम्हें पता चलेगा कि उस दिन सर कुछ बोल रहे थे, मैं कन्विंस भी था, आज याद नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहे थे। और ये डाउट कब आता है? जब ये बैठ के खुद सॉल्व करते हैं ना, तो ये डाउट होता ही होता, होना ही चाहिए। क्योंकि 4464 या फिर 6664 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए जो बेस, ये दोनों देखने जाए तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल है, तो क्यों उसको 112 से डिवाइड किया, क्यों सीधा 12% मल्टीप्लाई नहीं किया? एनीवन हैज एनी थॉट ऑन दिस? चलो थोड़ा आज my interest already 8 थे वही। how, that is what we are asking, no? 4464 is a principal for the last installment. मेरा पॉइंट समझे ना तुम? पॉइंट समझे ना मेरा? तो वो भी नहीं समझे? पॉइंट समझ लिया ना? तो बताओ ऐसा क्यों? ये को वेग आंसर मत देना ऐसे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आई नो दैट। व्हाई इज अ क्वेश्चन, व्हाई सो? उसमें कैश प्राइस और इंटरेस्ट दोनों ऐड है। किसमें? मम्मी जो एड्रेस આપે ને मैंने यूज टू आस्क ફોર ધ સ્નેક્સ નો, ભૂખ લાગી છે તમને? મમ્મી બીજા રૂમમાં બેઠી છે, મમ્મીને પૂછો નાસ્તો ક્યાં પણ, જો ત્યાં પેલા ડબ્બામાં છે, કઈ બાજુ જોવું અને કયા ડબ્બાની સાથે, वो आंसर दिया ना, એમાં ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્ક્લુડ, અરે શેમાં કેટલું કેવી રીતે, ધેટ ઇઝ અ ક્વેશ્ચન નો। ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્ક્લુડ છે એ તો મને ખબર છે, એટલે જ ડિવાઇડ બાય 112 કર્યું, हमें पता है ना इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन दैट, दैट्स व्हाई वी डिड इट 112 से डिवीजन, वरना क्या, वो तो पता ही है, तो कैसे ये लॉजिक कैसे आया, दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। चलो एक काम करते हैं, सर्वे करते हैं। अब यहाँ पे जो बैठे उनका हो पाएगा, यहाँ पे होगा उनका, ऑनलाइन वालों का नहीं होगा। 12th में किसके 90 से ऊपर परसेंटेज आया, उनको नहीं पूछूंगा, डोंट वरी, इसलिए मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि जिसके कम आया ना उनको पूछना चाहिए ना। 90 से ऊपर किसके परसेंटेज आए? किसी के नहीं पे, सब मेरे जैसे ही हो। चलो 80 से 90 के बीच में, डरी डरी ने हाथ ऊंचो करे थे बता। 80 से 90 के बीच में परसेंटेज कितने थे आपके? पीछे भी था ना शिफा? 90 वाले से स्टार्ट करते हैं। यस, टेल मी व्हाई इट इज सो। સર 5000 કેશ પ્રાઇસ છે ને એમાં પહેલેથી 4 વખત ઇન્ટરેસ્ટ ગણાય, ઇન્ડિયા છેક સુધી આઉટસ્ટેન્ડિંગ રહી છે એટલા માટે। गुड, कितनों को समझ में आया? ये बोला सही है आंसर इसमें। यस दीपू, સર
अटेंडेंस राजू रस्तोगी भी तो बुला यार सर। नहीं सर, तो मैं आया नहीं पहला तो फिर अरे यार, yes, tell me what, why you feel that this 4460 is inclusive of interest? 60-70 के बीच में भी इतने मेरे जैसा। ओहो, मेहनत करवी पड़શે આપણે બંને જણા। Please understand, the base of calculation is never a cash price. In the question, the base of calculation is never a cash price. It is always a installment amount, that is a higher purchase price. Now if you can see on the time frame, so whatever interest that we eliminated 536 from the last installment was not for 3 years, that was only for 1 year, and interest get accrued every year. So effectively this 4464 may be principal for the last one, but it is inclusive of interest for the second one. क्यों? क्योंकि ये 5000 पे पहले दिन से इंटरेस्ट लगते आया है और हमने जो एलिमिनेट किया वो सिर्फ 1 साल का था, तो उसके आगे वाले साल में भी इंटरेस्ट होगा, उतनी वैल्यू उसकी ज्यादा होगी कम होगी। Are you getting what I'm saying? That is the reason why this 4464 has been considered as an inclusive of interest. Am I clear on this? Sure. वापिस से 4460 is a principal cash price, yes, but only for last installment, not for the second last. क्योंकि सेकंड लास्ट के लिए तो इस पे ऑलरेडी इंटरेस्ट है, क्योंकि 5000 इज अ लास्ट इंस्टॉलमेंट विच विल बी आउटस्टैंडिंग और विच वाज आउटस्टैंडिंग फ्रॉम फर्स्ट डे, तभी तो लास्ट इंस्टॉलमेंट है। समझ में आ रही है ना बात? इसलिए सेकंड इंस्टॉलमेंट में फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन इट शुड बी ट्रीटेड एज इंक्लूसिव, एज गुड एज 3000। अब 3000 सेकंड के लिए ठीक है, प्रिंसिपल में डिडक्ट कर दो इंटरेस्ट कि 3000 में इंटरेस्ट कितना, तो जो लास्ट का इंटरेस्ट वो और 3000 का खुद का इंटरेस्ट वो दो एलिमिनेट कर दो, तो जो बचेगा 2200। तो ये 2200 ठीक है, प्रिंसिपल है, लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आने के लिए हमने 4460 और 2200 दोनों को लिया, क्योंकि ये वापस से आउटस्टैंडिंग होंगे हमारे अगले साल में। हेलो, समझ में आ रही है ना बात? तो ये जो 800 इंटरेस्ट है, 800 इंटरेस्ट है वापस से, ये जो 800 इंटरेस्ट है सेकंड इंस्टॉलमेंट वाला, वो सिर्फ 3000 पे नहीं है ना। 3000 पे 12% थोड़ी इतना सारा होता। दैट मींस इट इज आल्सो ऑन 4464 as well as 3000, therefore both has been eliminated. Am I clear on this? Sure, 100%. So this is something which I was expecting as a question from you. तो जब बैठ के जब सॉल्व कर रहे हो ना, तो यही पॉइंट आता है जहां पे ब्रेक लगती है दिमाग पे कि नहीं नहीं नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग में कुछ गड़बड़ है यार, दिस इज अ प्रिंसिपल, देन हाउ इट कुड बी इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज अ नॉर्मल थिंग। बट if you are having a clarity of thought on this, now we will not get stuck with that. Everyone clearly understood? Fine, let's move on the next question, next situation. Situation number 3. Let's see what is the information of the question. Everyone please be ready with the material. मटेरियल को घर से लेके आना होता है, रिवीजन। अब घर के रिवीजन के लिए यहाँ का थोड़ी बिगाड़ना होता है। क्यों इंपॉर्टेंट है मटेरियल?
नहीं होता तो मैंने नहीं दिया होता ना, इधर ही लिखे होते क्वेश्चन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि किसी क्वेश्चन में कोई की पॉइंट आया ना तो आप क्वेश्चन में ही साइड में लिख लो। वैसे तो मैंने सिचुएशन मेंशन की हुई है हर एक क्वेश्चन के, लेकिन खुद के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी कुछ अगर लिखना चाहो तो आप लिख लो। इतनी सारी जो जगह मैंने छोड़ के रखी हुई है ना फॉन्ट के बीच में और सब जगह पे, उसका रीजन ही ये है कि आप कुछ लिख पाओ, आपको जो कुछ भी लिखना है। सो let's see what is the situation when only installments are given but cash price and the rate of interest are not given. What has been given? Only installment has been given. What has not been given? Cash price and दोनों नहीं दिए हैं। तो क्या सॉल्व करेंगे? Let's see. Action company purchased a motor car on April 1st, 2009. Everyone, please pay attention to the question. Action company purchased a motor car on April 1st, 2009 on an hire purchase basis, paying 60,000 cash. This is your down payment, and balance in 4 annual installment of rupees 55,000, 50,000, 45,000, 40,000. Each installment comprising equal amount of cash price. कितनी वो नहीं बताया है. Equal amount of cash price at the end of each accounting period. This is again very important कि भाई पहला इंस्टॉलमेंट भी कब पे हुआ है? 1 साल खत्म होने के बाद. पहला इंस्टॉलमेंट भी कब पे हुआ है? 1 साल खत्म होने के बाद. So this is something that you need to take care. You are required to calculate total cash price and the amount of interest in each installment. अब जरा ध्यान से जरा देख लेते हैं, बाद में सॉल्यूशन पाते में आपको ये अपने हिसाब से पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ. What is happening in this case? There is a down payment. There is 1, 2. How many installments? 3 and 4. The down payment is of 60,000. The first installment is of 55,000. 50,000. 45,000 and 40,000. एक सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन ने हमें बताई वो थी that each installment, not down payment. Down payment, it's always only principal. It won't be having any interest element. Each installment contains the same amount of principal. Hello. Each installment contains the same amount of principal. We know the equation or how the installment has been derived. The installment has been derived with this equation: principal plus interest is equal to, you have below this whatever has been given is your installment. ध्यान से सुनाइए. एंड उन्होंने क्या बोला हमें कि हर एक इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल सेम है, तो बाकी जो है वो क्या है? इंटरेस्ट है. अब जो हमने पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी कि पहले इंस्टॉलमेंट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, इसलिए पहला इंस्टॉलमेंट सबसे बड़ा है. पहला इंस्टॉलमेंट सबसे बड़ा है और धीरे 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 वो कम होता जा रहा है. गेटिंग इट? We assume the principal has a peak because this is my installment amount, and if I apply the same rule here, it would be going to be principal plus interest, principal plus interest, principal plus interest, और यहाँ पे भी. लेकिन
अब जरा मैथमेटिकली सोचो. Students are requested to ensure that you are keeping on a mute. Next time, if someone is unmuting, I'm gonna give exit to them. Installment is made out of principal and interest. It is made out of principal and interest, and we have been informed that the principal is remaining same in all the installment. अगर प्रिंसिपल भी सेम हो, इंटरेस्ट भी सेम हो, तो कोई रीजन हो सकता है क्या इंस्टॉलमेंट अमाउंट बदलने का? लेकिन इंस्टॉलमेंट बदल रहे हैं. दैट मींस P इज अ कांस्टेंट बट I इज नॉट अ कांस्टेंट. हेलो, समझ में आ रही है ना बात? और जब प्रिंसिपल सेम हो हर एक इंस्टॉलमेंट में, ध्यान से सुनो, ये मैथमेटिक्स वाली बात है. प्रिंसिपल अगर हर एक इंस्टॉलमेंट में सेम हो तो लास्ट इंस्टॉलमेंट से सेकंड लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट डबल होगा, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है. समझ में आ रहा है लॉजिक? कैसे? ये जो होगा लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट, ये जो लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट होगा उसमें एक ही साल का प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट होगा, जबकि सेकंड वाले में क्योंकि प्रिंसिपल दो है, सेम अमाउंट है वापस से, तो इंटरेस्ट की साइज डबल होगी एज कंपेयर टू द लास्ट वन. सो यहाँ पे I नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे होगा क्या? This is your equation. Are you getting? Pick any two equation. Find out the value of I. Put it again in the installment. You can find out the value of principal and interest in each of the installment, and at the end we would be able to find out the cash price. कैसे? चलो एक करते हैं, फिर बाद में आप इक्वेशन में ये फिगर पुट करके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हर एक इंस्टॉलमेंट की ढूंढ लेना. हम इन दोनों को पकड़ते हैं. 1 2 1 माइनस 2 करेंगे हम, तो क्या होगा? P प्लस 2I इज इक्वल टू 45,000. P प्लस I इज इक्वल टू 40,000. We'll change the sign. This is 0. So I is equal to, you put the value of I in all this installment, you will have the principal value. Do the summation of all principal, add down payment in it, that would be the cash price. Am I clear on this? Everyone understood thoroughly? Sure. That is what again they have done in the solution also. Let's see what is the solution. They have calculated total amount of hire price 250, and then again they have made an equation. This is last installment, this is first installment, but we logically started, they directly provided the last equation, but we normally don't understand. So what we did, we started with the first, went to the last, and then ranking किया I का 1 2 3 4, क्योंकि लास्ट में सबसे कम होगा और प्रिंसिपल सेम है, तो इंटरेस्ट होता जाएगा, बढ़ता जाएगा टू द एक्सटेंट. Am I clear? Sure. Start writing. चलो. The solution I'm keeping only for the purpose of reference. You can use what we did for understanding of an equation. लेकिन फॉर्मेटिंग अच्छे से होना चाहिए. That installment amount is equal to principal plus interest, and since its remains principal remains same in all installment, we can make the following equation. फिर ये equation लिखना, ठीक है? डाउन पेमेंट का क्या होता है? P प्लस इंटरेस्ट 0I. समझ में आ रही है ना बात?
after splitting the interest out of equation, you can put it in this table and find out the principal amount, installment amount. So this table is an ultimate solution for the question. Fine. ऊपर वाला presentation आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं.
Done. Question number 4 then. Everyone has written this, no? Let's see situation number 4. This is relating to the using time value of money factor, present value factor, whatever you understand. This is a type of questions, question 4, which has been asked most of the times as a part of your MCQ. So this question 4 category, अगर इसमें से कुछ आपके MCQ में डालना है तो वो होगा ये question 4 की category. You can mark it as an important from an MCQ point of view. कुछ है नहीं क्वेश्चन में, 2 मिनट से ज्यादा दे ही नहीं सकते इसको. So let's see. On 1st January 2010, X purchases a plant from Y. X is a buyer, Y is a seller on hire purchase system. The hire purchase rate was settled at 60,000 rupees payable as to rupees 15,000 on 1st January 2010, that is on the same day, that is your down payment, and 15,000 at the end of 3 successive years. So 15,000 के टोटल 4 इंस्टॉलमेंट है हमारे, लेकिन पहला इंस्टॉलमेंट P0 पे हो रहा है, उसमें कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं होगा, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू नहीं होगी. हेलो, therefore the first installment is actually nothing but your down payment. Now the amount is remaining same as of an amount of installment, but actually it is not an installment, it is your down payment. Am I clear? The interest was charged at the rate of 5% per annum. The asset was to be depreciated in the books of purchaser at the rate of 10% per annum on reducing balance method. अब उसका कुछ रिलेवेंस नहीं है यहाँ पे depreciation का, फिर भी दिया हुआ है. Given the present value of annuity of ₹1 at the rate of 5% interest is 2.7232. Now please understand. Now before we go to the solution, I want you people to understand how this 2.7232 is coming. Now for that, again अगर मैं इसको period रखूं 0, 1, 2 and 3, उस तरीके से हो रहे 4. हर एक लेवल पे इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है क्या? 15,000, 15,000, 15,000, 15,000. अब ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं. There are 2 type of values, present value and future value. So you cannot travel in a time, but so far as money is concerned, money can travel into the time. We cannot. So money can go from present to future also. Money can go from future to. Are you getting what I'm saying? Example, when you're parking and fixed deposit of 1 lakh rupees today, कुछ किए बिना हम क्या करते हैं? एफडी पार्क करने के बाद कुछ करते हैं क्या? कुछ किए बिना 1 साल बाद अगर 10% इंटरेस्ट हो तो 1 लाख का क्या हो जाएगा? 1 लाख. तो आज उसकी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है उसकी? 1 लाख. फ्यूचर वैल्यू कितनी है उसकी? समझ में आ रही है ना बात? तो हमने किया क्या? प्रेजेंट वैल्यू इज ऑलवेज 1. हमने 1.1 से मल्टीप्लाई किया. अगर आगे बैठ के जाना है
तो 1.1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फ्यूचर में जाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन। तो रिट्रोस्पेक्टिव, फ्यूचर से प्रेजेंट में आना है तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा, डिवाइड। हेलो, अब टाइम में तुम्हारी जितनी जर्नी है उतना उसको रेस देना पड़ेगा। 1 साल जाना है तो तुम सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे 1.1 रेस टू 1, सो दैट इज 1.1। 2 साल ट्रैवल करना है तो 1.1 रेस टू 2। समझ में आ रही है ना बात? 3 साल जाना है तो 1.1 रेस टू 3। तो बेसिकली 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 रेस टू 3, मतलब वही। जितने साल जाना है, n नंबर ऑफ इयर्स तक जाना है तो रेस टू n। मल्टीप्लाई हम कब करेंगे, जब प्रेजेंट से हम कहां पे जा रहे हैं, फ्यूचर से जब वापस प्रेजेंट में आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। मतलब क्या, समझो, है मल्टीप्लिकेशन ही, लेकिन किसका मल्टीप्लिकेशन। पहले केस में हमने 1 पॉइंट, अगर 2 साल जाना है तो हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया। दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन क्या, इसका उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। इसका उल्टा क्या, 1 डिवाइड बाय, समझ में आ रहा है ना मैं जो बता रहा हूं अभी। अब कीपिंग दिस इन अ माइंड, you just need to understand or tell me that installment amount is a future value or it is a present value. Installment amount is a future value or present value. The future value. Present value is a cash price. So higher purchase price actually is a future value. That is the reason price is getting increased. Otherwise, goods are not having any value addition other than increase in the price. So the question has given us an installment, which is a future value. And based on that, we need to find out a principal, that is a present value. The gap between present value and future value is a time value of money. We know it in the name of interest. Everyone, I hope you are getting it. So P0 पे तो तुम ट्रैवल ही नहीं कर रहे हो कहीं पे, यहाँ हो, आज ही हो, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 ही रहेगा, क्योंकि आज ही हो, ना तुम्हें पास्ट में जाना है ना तुम्हें फ्यूचर में जाना है। अब क्योंकि हम इंस्टॉलमेंट से कहां पे आएंगे, हम आएंगे कैश प्राइस में, तो हम आएंगे कहां पे, फ्यूचर वैल्यू टू प्रेजेंट वैल्यू, वापिस आएंगे। तो इक्वेशन जो आएगा वो क्या आएगा, 1 डिवाइड वाला, उल्टा, क्योंकि हम वापिस आ रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। अरे गेटिंग? अब क्योंकि P0 पे जो डाउन पेमेंट का पेमेंट हुआ उसमें तो कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग एट प्रेजेंट लेवल, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू दोनों कितना रहेगा, सेम रहेगा। अब पहला इंस्टॉलमेंट ने कितना ट्रैवल किया, पहले इंस्टॉलमेंट ने कितना ट्रैवल किया, 1 साल, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिवाइड बाय 1.05, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है ना, therefore 1.05। दूसरे इंस्टॉलमेंट ने कितना ट्रैवल किया, 2 साल, सो 1 डिवाइड बाय 1.05 रेस टू 2। तीसरे ने 1 डिवाइड बाय 1.05 रेस टू 3। अब इसको न्यूमरेटिव वैल्यू दिखाऊं हम, तो ये तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का न्यूमरेटिव वैल्यू, इसका तो 1 का 1 ही रहेगा। यू जस्ट नीड टू टेक अ कैलकुलेटर, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, यू जस्ट नीड टू टेक अ कैलकुलेटर, दोज हु हैव नॉट डन, फॉर देम it is simply 1 divided by 1.1, how much, 0.9090, 0.90, I'll say, I'm sorry, yes, हाँ भैया, 1 divided by 1.05,
0.9524। और कुछ नहीं करना है, इक्वल टू दबाना है तो दूसरे साल का मिलेगा। कितना आ रहा है? 90। एक और इक्वल टू दबाना है, एक जन बोलो भाई। 863। ठीक है, अब करना क्या है, ये 15,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये 15,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये 15,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे। कितना अमाउंट आ रहा है देखो, पहले वाले में 14,286, देन 12,957। ठीक है, the summation of all this is nothing but your, एक ये तरीका हुआ which is actually time consuming। देखो ये तरीका आप कब फॉलो करोगे वो भी मैं बात में बताऊंगा आपको। तो एक ये तरीका हुआ जिससे कि आप कैश प्राइस ढूंढ सकते हो। यू डू द समेशन ऑफ ऑल दिस फोर फिगर, दैट इज द कैश प्राइस, and you find the total difference between cash price and installment amount का summation 60,000, that would be your total interest amount। तो एक ये तरीका हुआ सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है और ये कब इस्तेमाल होगा वो समझना, ये एक्सरसाइज मैंने इसीलिए की तो तुम्हें समझ में आए कि ये तरीका कब यूज करना है। जब आपके सारे इंस्टॉलमेंट सेम हो, सेम है हमारे केस में, तब ये दूसरा तरीका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। जब इंस्टॉलमेंट बदल रहे हैं, मतलब 15,000 है, दूसरा 17,000 है, तीसरा 22,000 है, तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट अगर आपके बदल रहे हैं तो आपको ये फर्स्ट वाला मेथड यूज करना चाहिए। अगर इंस्टॉलमेंट सेम ही रहते हैं तो आप क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज कर सकते हो। क्या क्यूमुलेटिव? क्यूमुलेटिव मींस व्हाट? समेशन। किसका समेशन? इसी को तो डिस्काउंट हो रहा है ना, ये कहां डिस्काउंट हो ही रहा है। तो डू द समेशन ऑफ फोर दिस फिगर, 0.9524 plus 0.9070 plus 0.8638. Do the summation of all these four figures. 2 point and what discount factor that has been given to us? So this 2.72 basically is nothing but your cumulative risk. Rounding off की वजह से difference हो भी सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है same ही हो, but that won't be a much difference. The reason of doing this exercise was just to make you understand that if the installments amounts are remaining same, then what you can do, rather than doing year wise, what you can do is you simply convert, you can simply convert the whole figure in one shot. कैसे? बाय वे ऑफ मल्टीप्लाइंग। कैसे मल्टीप्लाई करना है अब जरा समझो, यहाँ पे इसमें कंफ्यूजन होगा। अगर कॉन्सेप्चुअली नहीं पता है ना तो सबने किया हुआ ही होगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। अब देखो इंस्टॉलमेंट मेरे 3 है, 15 15 15। सो टोटल अमाउंट कितना पे हो रहा है? 45। कितना पे हो रहा है? 45। पर ये 45 इज नॉट अ प्रेजेंट वैल्यू, 45 इज अ, तो 3 इंस्टॉलमेंट, 3 की वैल्यू 3 नहीं है, प्रेजेंट में उसकी कम है, क्योंकि टाइम बढ़ेगा तो वो भी वैल्यू बढ़ेगी। तो 3 की वैल्यू कितने? 1 2 3 की वैल्यू 3 नहीं है। अगर यहाँ पे 1 1 1 होता है तो 3 की वैल्यू 3 थी, तो यहाँ 3 की वैल्यू 3 नहीं है। कितनी है 3 की वैल्यू? 2.7232। so this is your cumulative discounting factor. This is your cumulative discounting factor. You just simply need to multiply this 15,000 with 2.7232
32 सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट, बिकॉज इंस्टॉलमेंट ही फ्यूचर वैल्यू है। डाउन पेमेंट 15,000 में कुछ डिस्काउंटिंग नहीं है। व्हाट इज दिस? 40। अब उसमें हमारा डाउन पेमेंट 15,000 ऐड करेंगे, दैट गिव्स 55,848। तो आप ये 4 का समेशन करो या ये करो, आएगा तो सेम ही कैश प्राइस। लेकिन कौन सी मेथड कब यूज करनी है, इसके लिए हमने दोनों एक्सरसाइज की। जो दूसरी वाली मेथड है शॉर्टकट है, सीधा मल्टीप्लाई करो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट और आपको उसमें डाउन पेमेंट ऐड करो, आपको कैश प्राइस मिल जाएगा। लेकिन आप ये तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब सारे इंस्टॉलमेंट की अमाउंट सेम हो। अगर इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बदल रही है तो आपको पहली मेथड यूज करनी चाहिए, अगर डिस्काउंटिंग करना है तो। कौन सी? पहली वाली, क्योंकि हर एक अमाउंट अलग है तो हर एक को इंडिविजुअली उसके डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंडिविजुअली। Am I clear on this? Sure? 100%? Write down with both the method. And this conclusion that we understood, no? That also I suppose you should write down. कि कौन सी मेथड कब यूज करोगे या करनी चाहिए।
Now below this question, there are past exam questions which has been given, which is to be kept as a part of your homework. Starting with question 5. Answer has been given, but the detailed answer of the same would be available on our application. पूरा solution के साथ application पे post करूँगा, which you can see, you cannot download, but you have to solve it. The answer will be posted on the next day. So all these answer in a detail will be posting on the next day. By tomorrow, you are supposed to complete this, starting with question 5 up to question 10. Right? Answers of the same has been given. You can do on your own. Next day, if you are not able to do it, we'll be posting the whole detailed answer on a portal, which you can then verify that where you did the mistake. Fine. Now, since still there is a time of 15 minutes, I wish you to start with question 5. Start doing it, everyone individually. We are now starting the fresh topic because I don't think I'll be able to finish in the 15 minutes. So let's do this classwork. You have the pamphlet, you have the answers. Start doing it right now, everyone. The question has got vanished. Sir, can you please put up the question on the screen? You don't have the soft copy of material. No, sir, actually we are from Bharuch, so You are on Telegram or not? yes, sir. So kindly take out some time to go to the Telegram and open that file. Sure. Sir, the soft copy is not available on the Telegram.
I just posted it on the Telegram now. I'm stopping the lecture at 9:30. You can have a break of 15 minutes.